हेलो। या एक बार आवाज का कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा। आवाज का कंफर्मेशन कर दीजिए जल्दी से जल्दी। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। एक बार कंफर्मेशन कर दीजिए बेटा, सब कुछ ठीक है, ऑल क्लियर। चलो चलो, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गेट वाला। सब लोग एक बार आपका अटेंडेंस दिखाइए। तो मैं हूं सतीश कुमार, सीओ के लेक्चर का लास्ट टॉपिक इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग के लिए मैं स्वागत कर रहा हूं। कल हमारा सेशन नहीं हो पाया क्योंकि ये साउथ में पूरा बारिश है, पूरा थंडर स्टॉर्म्स है। So last class I was unable to take because in Pondicherry there's a lot of storms, thunderstorms. Okay, so आज मैं कोशिश करूंगा आपको पाइपलाइनिंग के बारे में पूरे आइडिया दिखाऊंगा। ओके सर, सम स्टूडेंट आस्किंग, सर हमको 8085 8051 का इंस्ट्रक्शंस का एड्रेसिंग मोड्स पढ़ाना है। जरूरत नहीं है बेटा, इतना डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो टू द डेप्थ। आई हैव ऑलरेडी गिवन मेरा क्लास का जो कुछ पीडीएफ है, जो कुछ कंटेंट है, एक बार पढ़ो, आपको कुछ क्लैरिटी आएगा। जस्ट गो थ्रू माय पर्टिकुलर कंटेंट, आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। ओके, एक्चुअली आई हैव फिल्टर्ड द सब्जेक्ट, आई हैव फिल्टर्ड द सीओ सब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ईसी अंडरस्टैंडिंग। ओके माय डियर, चलो सेशन को स्टार्ट करेंगे। प्लीज शो योर रेडीनेस। जल्दी से जल्दी आप जल्दी से जल्दी आपका रेडीनेस दिखाइए बेटा। आज का सेशन को स्टार्ट करेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा डिले हो गया, टेक्निकल ग्लिच है। चलो माय डियर, जल्दी से जल्दी आप। यस सर, डिड ऑल योर लेक्चर इन दीस 2 डेज, थैंक यू। कल का पीडीएफ भी आपको मिलेगा, डीपीपी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव डीपीपी दिया कल ने मैंने, तो सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट पर्टिकुलर डीपीपी। so try to do it, otherwise I will provide a mcq model dpp sooner or later. okay, so dpp जल्दी से जल्दी आप, जो कुछ डीपीपी मैंने दे रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डीपीपी दे सकता हूं, थोड़ा इजी डीपीपी दे सकता हूं, वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ द डीपीपी, आप ट्राई टू सॉल्व। ओके, ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑन योर ओन, देन ओनली आपको क्लैरिटी मिलेगा। चलो सेशन को स्टार्ट करेंगे। जितना लोग पहले बार मेरे सेशन को देख रहे हैं, मैं सतीश सर हूं, डी सतीश, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एक्सक्लूसिवली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मुझे बहुत सारा बच्चे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, सर ये सीएससी का सिलेबस है। सीएससी के लिए मैं इतना डेप्थ में, सीएससी का कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है। एक्चुअली सीएससी का सिलेबस बहुत सारा कॉम्प्रहेंसिव है। हमारा ईसी में इतना कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस नहीं दिया है, इसलिए मैंने कंप्रेस करके, फिल्टरिंग करके ईसी बच्चों के लिए क्या चाहिए उसको दे रहा हूँ। ओके, we don't have the history of COA questions for ECE, but I have taken my own initiativeness by CSC syllabus. What type of questions can be asked here? With respect to that only, I have prepared the DPP. So please follow the DPP. Okay, chalo. Very good, very good, very good. चलो चलो, तो लेट अस रिवाइज जो कुछ टॉपिक्स हमने अब तक डिस्कस किया है। अब तक हमने इन द फर्स्ट लेक्चर आई हैव कवर्ड द मशीन इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर द मशीन इंस्ट्रक्शंस आई हैव कवर्ड द एड्रेसिंग मोड्स 1। आफ्टर द एड्रेसिंग मोड्स 1, एड्रेसिंग मोड्स 2। नेक्स्ट लास्ट क्लास में हमने सीपीयू साइकिल टाइम, ओके, सीपीयू का एवरेज साइकिल पर टाइम क्या होगा, सीपीआई एवरेज बोलो तो क्या है, पूरा एक प्रॉब्लम भी करवाया हमने। बहुत अच्छा क्लैरिटी से मैंने बच्चों को दिया है। सो दैट इज इनफ फॉर द ईसी पीपल। ओके, एंड आज का लेक्चर मैं स्टार्ट करना चाहता हूं। आज का लेक्चर है पाइपलाइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस पाइपलाइनिंग? ये पाइपलाइनिंग के बारे में, एक्चुअली वन सेकंड, ये पाइपलाइनिंग के बारे में add some
आज का टॉपिक है पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब क्या होता है, पाइपलाइनिंग ईसी बच्चों के लिए क्या हो सकता है, आई मीन टू से विथ रेस्पेक्ट टू प्रोसेसर हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पाइपलाइनिंग। ओके माय डियर, सो पाइपलाइनिंग बोलो तो व्हाट, while you are doing one task, while you are doing one task, okay, if you are having a facility, if you are having a facility to fetch the next task, so that by the time I complete this transaction, मेरा ये काम पूरा होने के बाद रेडी से रेडी मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, रेडीली मुझे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, देन उसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग बोलते हैं। मैं एक अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। अगर मैं एक हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, हाउस का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, हाउस कंस्ट्रक्शन में आई एम द पर्सन हु इज कीपिंग द हु इज अटैचिंग द ब्रिक्स ऑन ए वॉल। ओके, मेरे पास सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स एवरीथिंग अवेलेबल है। सो मैं एक एक ब्रिक को ऐसा पेस्ट करके जा रहा हूं। ओके माय डियर, अगर ब्रिक्स समवेयर है एंड द ब्रिक्स आर एट अ फार डिस्टेंस, क्या है मेरा हालत क्या है, आई एम द ओनली वन पर्सन। So first I will go to the place where the bricks are available, जहां bricks available है वहां से एक brick लूंगा, brick कलेक्ट करके वो brick वॉल के ऊपर पेस्ट करता हूं, नेक्स्ट वॉल के ऊपर पेस्ट करता हूं। ये brick का पेस्टिंग पूरा होने के बाद फिर अगेन I will go वापस और एक brick को लेता हूं। This is a process, right? So here try to understand, while I am pasting the brick on a wall, there is a time. If some other person or if there is another process such a way, by the time I complete this brick pasting, if another person or if an assistant is giving me one more brick readily available here, so that there is no need of for me to go there, मुझे इतना टाइम सेव हो जाएगा, बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। Why unnecessarily I should waste my time? Okay, so I am the person who is pasting the brick. I should not go to the place where the bricks are present. समझ में आपको अगर 8085 आर्किटेक्चर और 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर देखे तो 8086 माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर में आपको क्लियरली एक क्यू मैकेनिज्म है। सो व्हाइल द बस इंटरफेसिंग यूनिट इज परफॉर्मिंग वन इंस्ट्रक्शन, क्या होगा, एक बस इंटरफेसिंग यूनिट परफॉर्मिंग वन इंस्ट्रक्शन, अनदर इंस्ट्रक्शन इज रेडीली प्लेस्ड इन द इंस्ट्रक्शन क्यू। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग में क्या है, एक पाइप इमेजिन करो, पाइप का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक पाइप का स्ट्रक्चर ऐसा है। फॉर एग्जांपल इमेजिन ए पाइप लाइक दिस माय डियर, सो दिस द पाइप, सपोज इमेजिन ए पाइप लाइक दिस, by the time there is a queue out is happening, that means a quality of water is going, a quantity of water is going, at the same time some amount of water is coming inside. Am I right or not? By the time a particular water content is going out, another water content is coming in. Okay, so this is happening parallelly. Pre-fetching of the next instruction while the present instruction is under execution, उसको हम बोलते हैं पाइपलाइनिंग बोलते हैं। Pipelining is first introduced by the Intel company. So Intel organization has introduced this pipelining concept. इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड ऑफ द प्रोसेसिंग बढ़ गया। बच्चों ऐसा सोच लो, मेरा पास एक प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर इज एग्जीक्यूटिंग सर्टेन इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट करना है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना चाहते हो, there is what is the hardware requirement, either I have to change the processor or I have to change the clock frequency. Am I right or not my dear? I have a XYZ processor beta, whether it is a 8085, 8086, something. मेरे पास एक प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टाइम में इतना इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड को बढ़ना चाहता हूं, क्या करना है, प्रोसेसर का हार्डवेयर चेंज करना है। यस सर नॉट, बिना प्रोसेसर का हार्डवेयर चेंज करना, विदाउट चेंजिंग, बिना चेंज कर, आई डोंट वांट टू चेंज द हार्डवेयर। Okay, you understand my point? Without changing the hardware, if I want to increase the speed of execution, there is one technique available. So that technique is called pipelining. Pipelining is a process without changing the hardware, without changing much hardware, we are introducing a mechanism into the structure of the CO so that the processing speed बढ़ जाता है, processing speed increase हो जाता है। मैं एक अच्छा एग्जांपल, ईसी बच्चे इधर है, जितने ईसी बच्चे एक बार हाथ दिखाइए, क्योंकि पहले मैं ईसी बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं, उसके बाद सीएससी बच्चों के बारे में सोचता हूं।
क्योंकि ईसी बच्चों का सिलेबस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. ईसी बच्चे, हाउ मेनी मेंबर ऑफ ईसी स्टूडेंट्स आर देयर? प्लीज राइज अ हैंड सो दैट आई कैन एक्सप्लेन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू ईसीई व्हाट इज पाइपलाइन. मुझे आंसर रिप्लाई दीजिए बेटा. How many of the EC students are watching here? Okay. See, listen here. In 8086 microprocessor, for example, if I am taking instruction pipelining, what do you mean by instruction pipelining? Just a basic idea I am giving. Instruction pipelining, a basic idea I want to give. For example, if I am having an instruction like this in a 8086 processor, like this move AL comma, suppose some 24. Let us take this particular processor starting from data segment 1000. So this is a data segment, and let us take this a code segment. Let us take this a code segment instruction, and this is what we call instruction pointer. The instruction pointer is 000. Okay, my dear. CS:IP कोड सेगमेंट एंड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर का इंस्ट्रक्शन यहां से है, मूव एल का 24 है. फॉर एग्जांपल ये 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई एम टेकिंग ए मेमोरी माय डियर. आई एम टेकिंग ए मेमोरी लाइक दिस. ओके, ये है मेरा मेमोरी है. सो दिस इज मेरा कोड सेगमेंट का लोकेशन है 1000. ओके, तो 1000 बोलो तो हमने 0 ऐड करना है. सो 10,000 इज अ बेस एड्रेस. 10,000 द बेस एड्रेस. 0 आपने ऐड करना है. सो ये पूरा काम कौन करता है? बस इंटरफेसिंग यूनिट करता है. 8086 में आपको बस इंटरफेसिंग यूनिट बोल के एक यूनिट है. सो इन 8086 माइक्रोप्रोसेसर फर्स्ट टाइम द पाइपलाइनिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड. The pipelining concept was introduced when what processor? 8086. In 8086 we are having 2 units. Do you remember? आपको पता है 8086 माइक्रोप्रोसेसर में आपके पास 2 यूनिट्स है. वन इज द बस इंटरफेसिंग यूनिट माय डियर, अदर वन इज द एग्जीक्यूशन यूनिट. ओके, इधर एक बस इंटरफेसिंग यूनिट है, BIU बस इंटरफेसिंग यूनिट है, एंड हियर EU है, एग्जीक्यूशन यूनिट है. सो ये बस इंटरफेसिंग यूनिट क्या करता है? बस इंटरफेसिंग यूनिट एक्ट्स लाइक ए असिस्टेंट. बस इंटरफेसिंग कैसे एक्ट करता है? It acts like a assistant to the execution unit. ये कैसा एक्ट करता है? एग्जीक्यूशन यूनिट के लिए असिस्टेंट की तरफ से एक्ट करता है. मैंने अच्छा एग्जांपल दिया आपको. आई एम द पर्सन हु इज कंस्ट्रक्टिंग द वॉल. I should involve only in construction of the bricks. I should involve only in the placement of the bricks. I should not involve. मैं ऐसा काम नहीं करना चाहिए, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. Okay, I should not be involved in time wasting activities. What is the time wasting activity for me? Getting the bricks from the memory. You understand? So I am the person who wants to execute the instruction. I should not be worried about getting the content from the memory. So somebody has to do it. So this is what we call parallel processing. While I am executing instruction, if someone is getting the instruction and placing them in a queue, मुझे अच्छा होता है. समझ में आ रहा आपको? So bus interfacing unit will be performing prefetches. It prefetches the instruction and places in a mechanism called queue, my dear. What is that mechanism? There is a queue. There is a queue like this. एक queue रहता है. एक queue में a particular instruction को ऐसा place करके जाता है. So queue का format क्या है बेटा? Stack is last in first out, but queue का concept क्या है? First in first out ना? First in first out. So here there is a queue and the queue size is 6 byte. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so there is a 6 byte queue like this one. So this is 1, 3, 4, 5, 6 byte queue. So while the execution unit is executing this particular instruction, this bus interfacing will be prefetching and placing the second instruction. समझ में आ रहा आपको? ये बात समझ में आ रहा आपको? First in first out. Queue works according to first in first out. While the execution unit ये instruction को execute कर रहे हैं, ये particular bus interfacing unit is going on fetching the next instruction. समझ में आ रहा आपको? Got it clearly?
while the execution unit is executing the first instruction, the bus interfacing unit will be prefetching the next instruction, so that execution unit का काम होने के बाद automatically second instruction is readily available. Execution unit is no need to wait, execution unit is no need to go to the memory. That's what I was talking. So this is the memory, my dear. So यहाँ memory में मैं एक instruction लिख रहा हूँ. So this is the instruction I'm writing. So move AL, and this is the 000. This is the instruction pointer. Okay na? So this is the segment address, that is 1000, that is loaded in the code segment CS. IP का value 000 है पहले इधर. तो उसके बाद क्या होगा? This is 001, इसके बाद 0002. So the next instruction starts from this 002, my dear. Okay, so first instruction ends at this point. Okay, so the next instruction starts exactly at 002, and the next instruction will suppose move BL comma some 20. Okay, so here I am taking, so this is move BL and this is our 22. So this is the second instruction, and the second instruction ends at 003, and the third instruction comes at 004. So here comes the instruction 1000:0004. मेरा instruction आ रहा है add AL comma. Okay, so here a simple instruction, a 1 byte instruction, let us take add AL comma. Okay, उसके बाद the next instruction is at 005, so that is my halt instruction. So 1000:0005, this is my halt instruction. मजा आ गया? This is the way. Now first what happens? Listen carefully. What is going to happen in the mechanism? First, address bus is loaded with a value of 10,000 plus 000. So the processor goes on searching for the address 10,000. मजा आ गया? So the first instruction is at a location of 10,000. First instruction is nothing but move AL comma 24. ये particular instruction को लेके एक queue में लगाएगा. So queue is containing the instruction coded value of move AL comma 24, my dear. Got it, my dear? All of you understood? So first instruction starts from here. Of course, it's a 2 byte instruction, so it occupies 2 bytes. So 2 bytes are over. मजा आ गया? अब तो क्लियर है. बस इंटरफेसिंग यूनिट क्या कर रहे हैं? बस इंटरफेसिंग यूनिट ऐसा CS का वैल्यू है, सो दिस द कोड सेगमेंट का वैल्यू है, दिस द IP का वैल्यू है. ये CS IP को मिक्स करके ये पूरा फिजिकल एड्रेस मिल रहा है. मुझे 20 बिट का फिजिकल एड्रेस मिल रहा है. ये 20 बिट का फिजिकल एड्रेस को सर्च करता है बस. अगर बस को 20 बिट एड्रेस मिला, उधर एक इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन को लाके किधर किधर छोड़ देगा? एक क्यू में छोड़ देगा. मजा आ गया? क्यू में छोड़ दिया. And now the execution unit comes into picture. The execution unit directly goes to the queue. The queue works according to first in, first out. So this instruction is taken by the execution unit, and the execution unit के अंदर एक decoding process है. So it goes on executing the first instruction. मजा आ गया? अब तो ना क्लियर है? Now exactly at this moment, execution unit is executing the instruction of move AL comma 24. उसी समय बस इंटरफेसिंग यूनिट क्या करेगा? While execution unit is performing move AL comma 24, बस कभी फ्री होगा? एक बात अच्छी ध्यान से देखो बेटा, प्रोसेसर के हाथ, प्रोसेसर इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ द बस, लेकिन बस कब फ्री होगा? अगर आपने एक पर्टिकुलर एड्रेस को जाने के लिए और एक पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए आपको बस चाहिए, लेकिन बस किसके कंट्रोल में है? बस CPU के कंट्रोल में है. ओके बेटा, लेकिन कब CPU फ्री हो सकता है? While CPU is fetching the instruction, or while CPU is sending the data to the memory, or while CPU is getting the data from the memory, उसी समय बस फ्री नहीं है. Bus is under the busy. But again, when CPU is performing execution of instruction,
ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे, डाटा 24 को एएल अक्यूमुलेटर में प्लेस करना है, ये पूरा डिकोड करके उसके रिलेटेड रजिस्टर सेट को एक्टिवेट करके उसके रिलेटेड ट्रांजिस्टर लॉजिक को एक्टिवेट करके वो 24 नंबर को एएल में जाने के लिए वो प्रोसेस है ना, उसको हमको एग्जीक्यूशन बोलते हैं। वो एग्जीक्यूशन करने के समय बस फ्री है ना, यू अंडरस्टैंड माय डियर? प्रोसेसर इज व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन बस फ्री है। प्रोसेस इंस्ट्रक्शन के लिए सही के लिए आपको पता है, फेचिंग द इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूटिंग द इंस्ट्रक्शन, राइट बैक द रिजल्ट, 4 थिंग्स है। फेचिंग द इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन, executing the instruction, writing back the result. Fetching the instruction, decoding the instruction, executing the instruction, writing back the result. ये 4 स्टेप्स में प्रोसेसर कब फ्री है बेटा? This will not happen in Harvard architecture separate. Yeah, that's what I'm telling. Harvard architecture separate buses for data memory and processor memory. That is a different story, my dear. Okay, we are having a separate bus there. Yes, we are having a separate bus for data memory and processor. That is another way of pipelining. Data memory access करने के लिए एक बस है, कोड मेमोरी एक्सेस करने के लिए एक बस है. That is a different way of pipelining, my dear. But here देखो कैसा pipelining हो रहा है 8086 में. While the processor is executing one instruction, the bus interfacing will prefetch. कैसा prefetch करेगा? अगर आपने ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के समय आईपी का वैल्यू क्या होगा? while the execution unit is handling this instruction, at that moment instruction pointer क्या होगा? Instruction pointer will be updated to 002. Always instruction pointer will point to the next instruction directly. अभी क्या होगा? I am executing this particular instruction, the bus interfacing unit will go to this particular address, the next address क्या है? The next address 10,002 and वहां जाके move BL को लेके, that move BL is going to be kept here. This is move BL. So by the time this execution to complete this instruction, this data is automatically ready, my dear. Yes or not? समझ में आपको? Next instruction address समझ में आपको? This is what we call pipelining. ये pipelining का basic agenda है. पाइपलाइनिंग कैसे एग्जीक्यूट करता है, पाइपलाइनिंग हाउ इट स्पीड्स अप द प्रोसेस, आपको पता हो गया अभी. बट बिहाइंड द पाइपलाइनिंग COA में क्या पढ़ रहे हैं हम? इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं? इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? पाइपलाइनिंग का हार्डवेयर रिसोर्सेस चेंज नहीं कर रहे. वी आर नॉट चेंजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेस, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग. ये टाइम ऑफ पाइपलाइनिंग कैसे होगा? एक इंस्ट्रक्शन को लेके, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन लेके, एक इंस्ट्रक्शन को सेगमेंट्स को डिवाइड करके, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन सीरीज को सेगमेंट्स से डिवाइड करके वो सेगमेंट्स कैसे एग्जीक्यूट करेगा वो देखेंगे. ओके माय डियर, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? दिस इज व्हाट हैपनिंग इन अवर 8086. नाउ मेरा बात क्या है कि इन COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले? ऑलरेडी आपने माइक्रो प्रोसेसर में पाइपलाइनिंग का बेसिक फ्लेवर देख लिया. यस और नॉट माय डियर? पाइपलाइनिंग का बेसिक फ्लेवर देख लिया. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड नाउ. पाइपलाइनिंग का बेसिक अंडरस्टैंड पता हो गया एवरीबॉडी ऑफ ECE. Prefetching the next instruction while the present instruction is under execution is called pipelining. अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा in 8086 microprocessor which is supporting the pipelining, in 8086 microprocessor which register is supporting the pipelining, उसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए बेटा. 8086 microprocessor में पाइपलाइनिंग को कौन सपोर्ट कर रहा है? Which particular register is helping the processor to perform pipelining? उसके लिए क्या आंसर है? सही आंसर बताइए. This is a possible question. Very good. Program counter और instruction pipelining बेटा. Program counter और instruction pipelining. Okay, चल. So this is one important point. Actually pipelining हमारा day to day life में भी हो सकता है. कैसा? Suppose you are having a car assembly system, my dear. Suppose if you are having a car assembly system. You are having a car assembly system. Suppose imagine these cars are entering. There is an assembly line. Okay, my dear. Try to understand. There is a car's assembly unit. Okay. So here car raw material of the car ऐसा आ रहा है.
Okay, next this is a stage A entry. At stage B, stage A is somewhat what you call order. We can take stage A. At stage A, the car is entering and we are taking the requirement. What is the requirement of that car? Okay, so this is the requirement section. At stage B, we are going to take that car, whatever that car is there. So for that particular car, we want to add certain painting or certain color or certain wash, something. So this is what we call the painting or washing or whatever. Next, at stage C, billing and exit. Stage C क्या है? Stage C क्या है? Bill and exit. Bill and exit. मजा आ रहा है? एक मेरे पास एक बड़ा कार का वर्कशॉप है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मुझे कन्वेयर बेल्ट है. एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर फर्स्ट एक कार आ रहा है. फर्स्ट कार is coming. This first car, to completely coming out, how many stages it has to undergo? A particular car which is entered to my जनता गैरेज वर्कशॉप. मेरे को एक वर्कशॉप है, मेरा वर्कशॉप का नाम है जनता गैरेज. यहाँ जनता का पूरा सामान रिपेयर हो जाएगा. सो मेरा जनता गैरेज में क्या आ गया? एक दिन एक खतरनाक ओल्डेस्ट एम्बेसडर कार मुझे आ गया. वो पूछ रहे सर मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे अच्छा कलर चाहिए, दो हाफ एन आवर और 1 आवर में मेरा पूरा पेंटिंग खत्म होना चाहिए. चलो बेटा, मुझे एम्बेसडर कार 1 आ गया. सो फर्स्ट कार आ गया. So first car came, first request we have taken. Okay, this person needs this. Stage B we have done, add the paint color, red color or blue color or whatever. Stage C we have add the bill and exit. Now suppose if at the same time, at that particular time when I am, this particular car is under stage B, stage A is empty na. You understand my dear? So उसके लिए कैसे understand कर सकते हैं? So first of all, what is the point? We are having the requirement stage. Second stage is the painting stage. Yes or not? Last one is the exit bill stage. Exit means bill and exit. So bill and exit. For example, this particular requirement stage will take certain time T1. This paint stage will take certain time T2. The bill and exit will take T3. Obviously, ये different times हो सकता है और sometimes same time भी हो सकता है. That depends. Okay? Generally, requirement stage के लिए बहुत सारा time लगेगा, क्योंकि we have to listen the customer. What is actually his requirement? We have to take a data accordingly. We have to take a document signature. मैं example बता रहा हूँ आपको. So first stage के लिए बहुत सारा time लगेगा. It may take 40 states or 60 states. Actually हमको पता हो गया उसको क्या क्या चाहिए, उसको प्रोग्राम कर दिया. पेंट के लिए मुझे 3 T states चाहिए. And finally billing and exit also important, उसके लिए 3 T states. This number of T states हो रहा है. 3 stages चल रहा है. ओके बेटा, लेकिन मुझे ये पाइपलाइनिंग का इंपॉर्टेंस कब आएगा? अरे मैं जनता गैरेज वर्कशॉप में डेली कितने कार्स आएगा? टेल मी यार. In a per day, how many cars can be expected? Number of cars can be expected. Per day, we cannot expect only one car, right? So it is exactly in the mid center of the Mumbai. I can expect hundreds of cars or 200s of cars. Yes or not? So पाइपलाइनिंग का बेसिक एडवांटेज कब आता है? पाइपलाइनिंग का बेसिक एग्जीक्यूशन कब जाता है? Pipelining is especially used when a series of operations has to be executed per multiple times. When a series of segments have to be executable for multiple times, then pipelining का necessity आएगा. देखो बेटा, तो मेरे पास 3 cars हैं. Suppose मेरे पास 3 cars आ गया. For example, imagine the 3 cars. First, let us take non-pipelining operation. I don't have non-pipelining. That means what? I am the only one person who is taking the requirement. I am the same person. Next I am going and painting, and I am the same person. Next I am taking the billing and sending. That is what called non-pipeline.
If there is no non-pipelining, suppose non-pipelining क्या होगा? Non-pipelining means how many T states? For example, let us take each one, let us taking one T state. So this is also taking same T state. Let us assume same T state. Okay, my dear. So 3 T states है. तो कितना हो रहा है पेरा? 3 T states हो रहा है. So if I am the person, one car requires how many T states, my dear? How many T states? Yes or not, my dear? So for 3 cars कितना times होगा? For 3 cars कितना होगा? एक के बाद एक करना है, नॉट पैरेलल. समझिए आपको, एक के बाद एक करना है, नॉट पैरेलल बेटा. उसको हम बोलते हैं सीक्वेंशियल. इट्स नॉट अ पाइपलाइनिंग, इट्स अ नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस. कितना होगा पूरा? 3 कार्स के लिए 90 स्टेट्स हो रहा है. 90 स्टेट्स हो रहा है. So this is a non-pipelining. So let us keep this as non-pipelining separately. Now I am going for pipelining. Let us imagine the pipelining. So in pipelining, first pipelining methodology, let us take each car takes one T state only. Each stage is taking, for example, each stage is taking one T state. Each stage is taking one T state, for example. Okay, understand. So in pipelining, requirement stage क्या होगा? First car will enter. One. Am I right or not? Car 1 will enter. At that time, these particular stages will be T1 first state. Okay. So next T2 state में क्या होगा? T2 state comes here. T1 will be coming here. Yes or not? By that time, what happens? C2 can come here or not? Car 2 can enter into the requirement stage or not? Yes or not? मजा आ रहा है आपको? Next, what happens when it goes to the third state? See, this is the point you have to understand. By the time the first car to go out, how many T states are over? 3 T states are over, my dear. But remember, by the time this first car reaches to the destination, by the time this person is here, who can be here? Who can be here, my dear? Please tell me, who will enter here? Who will enter here? By the time C1 is going for billing, who will be coming here? The C2 will be coming here or not? C2 will be, so by the time C1 is under billing stage, C2 will be in a painting stage. By the time C2 is in painting stage, C3 will be what? In entry stage. Entry stage. Now what is the next state? All of understanding, my dear. All of understanding. Next, C2 will be coming here. C2 will be coming here. By the time C2 comes here, who will be here? C3 will be here. But I have only 3 cars, my dear. In that particular moment, only have 3 cars. You understand? Only 3 cars. And finally, C2 will exit and C3 will be coming here. So if you see now, total how many T states बन गए? You understand here? So कितना T states हमने consume कर रहे हैं बेटा? So this is 3 T states. उसके बाद कितना हो रहा है? 3 plus. So 3 particular cars है. तो 3 particular cars के लिए कितना T states consume हो रहा है? अभी देखो, पाइपलाइनिंग के बारे में सोच लो. पाइपलाइनिंग के सिस्टम में कितना हो रहा है अभी? How many T states we are able to complete? Yes or not? 5 T states. Excellent बेटा. 5 T states में खत्म हो रहा है क्योंकि 3 T states के बाद एक कार खत्म. First car to complete, definitely what is the minimum number of T states? 3 T states. उसके बाद immediately 4th T state. So first car out, first car exit by end of 3 T states. Next, second car exit by the end of 4th T state. Am I right or not? Third car exit by the end of 5th T state. Am I right or not, my dear? T1, T2, T3 out. T4 out. T5 out. मजा आ गया. A simple example से मैंने बोल रहा हूं. स्वागत जी, अनिशा जी, UPSC, everybody, all of you are following, my dear.
सो यहां से आपको एक फॉर्मूला निकालने की चांस है. From this we can derive a formula so that this formula I can use for some questions. So without pipelining कितना हो रहा है, with pipelining कितना हो रहा है. Without pipelining मुझे 90 states हो रहा है. Non pipelining system for a 3-car process 1000 है. समीर देव, हेलो हेलो हेलो. जितने लोग को क्वेश्चन, जितने लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मुझे रिस्पॉन्ड दीजिए बेटा. पाइपलाइनिंग सिस्टम फॉर ए 3-car प्रोसेस कितना टी स्टेट्स हो गया, 5 टी स्टेट्स हो गया. समझ गया आपको. नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम को कितना हो गया, 90 स्टेट्स हो गया. मजा आ रहा है आपको, जल्दी से बोलना है आप. चलो, सो डेफिनेटली आप प्लीज नोट डाउन हियर. पाइपलाइनिंग सिस्टम के लिए कितना हो गया, पाइपलाइनिंग takes 5 T states, non-pipelining takes 9 T states. 90 कैसा है, 3T for the first car, 3T for the next car, 3T for this car. So this logic is very very essential. मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, how many of you understood this logic? Any doubt here? Please raise your hands if you have any doubt. Please raise your hands if you have any doubt. मैं फिर एक्सप्लेन करने के तैयार हूं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन लेवल पर जा सकता हूं, उधर आपको एक फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं. सो मुझे फर्स्ट स्टेज ए है, स्टेज बी है, स्टेज सी है. एक्चुअली फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टेकन 1T 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 माय डियर. इट कैन बी मल्टीपल टी स्टेट्स आल्सो. तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बेटा. अगर ए रनिंग टाइम में, रनिंग प्रोसेस में, by the time C1 is about to go, C4 has entered. Try to understand. मेरा जो कुछ कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट पर फर्स्ट C1 आ गया, खत्म. स्टेज ए खत्म, स्टेज बी खत्म, स्टेज सी खत्म. While I am in stage C, C2 here, C3 here. When the C2 entered to stage 3, C1 entered to stage 2. At that time, another car came, number 4. अभी बताइए, fourth car entered, then how many T states? If the fourth car entered, then how many T states होगा? If the fourth car entered at this particular time, how many T states हो जाएगा? 6 T states हो जाएगा. Just one more T state में खत्म हो जाएगा. You understand? Only for the, as you are going on increasing the number of cars, what happens now? 5 T states, next 60 states, next 70 states, ऐसा खत्म होते जाए. Yes or not, my dear? Yes or not, my dear? No, not 3 more, my dear. Why? Because C4 has entered here. C4 has entered here, my dear. C4 has entered here, then C4 will be here, and finally C4 will be here. Yes. Parallelly देखो कितना हो रहा है. Got it? चल. Now इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लेके आ रहा हूं. अच्छा एग्जाम्पल की तरफ से हम प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे. तो आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल. स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है. ये मॉरिस, दिस इज फ्रॉम अ डिजिटल टेक्स्ट बुक, फ्रॉम द मॉरिस मोनो टेक्स्ट बुक है. मॉरिस मोनो टेक्स्ट बुक है, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है. मॉरिस मोनो टेक्स्ट बुक से मैं लेना. ओके, सो इफ इट, सर मेजरमेंट क्लास एंड हो गई. मेजरमेंट का यूट्यूब क्रैश कोर्स हो गया बेटा. मैंने ऑलमोस्ट उसे 10 लेक्चर्स लिया हूँ. 10 लेक्चर्स आई हैव टेकन, आई थिंक सो. मेजरमेंट्स में आपको इंग्लिश में अवेलेबल है एंड हिंदी में भी अवेलेबल है. मेजरमेंट्स का लेक्चर 1 शॉट सीरीज में अवेलेबल है एंड मेजरमेंट्स का यूट्यूब क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है. ओके चेतन जी, आप 2 लेक्चर्स आप रेफरेंस ले सकते हैं हमारा गेट वाला से. एक 1 शॉट सीरीज भी अवेलेबल है. 1 शॉट सीरीज मैंने पूरा इंग्लिश में पढ़ाया, दैट इज अवेलेबल ऑन गेट वाला इंग्लिश चैनल. ओके, एंड उसके बाद यूट्यूब क्रैश कोर्स स्टार्ट किया. यूट्यूब क्रैश कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल. Okay, clear? Chal. I am taking an example, my dear. I have suppose a segment 1. Let's take like this. I have some set 1. I have some numbers like this.
10, 20, 30. Okay, this is set 1 dear. Try to understand. One shot best है sir जी. Okay, okay. Set 2, क्रैश कोर्स इज लिमिटेड बेटा. क्रैश कोर्स जो कुछ हमको इंस्ट्रक्शंस मिला है, क्रैश कोर्स में जितना आवर्स में पढ़ना है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स वाज प्लान्ड इन द बिगिनिंग, so all the subjects have to be completed by a particular specific date. It is a live class, right? Okay, so that's why in one shot I have taken maximum, I think for each shot I have taken at most 1.5 hour plus almost 2 hours का classes में लिया हूँ. Okay, so set 2 I'm having some numbers, some 15, 25, 35. Set 3 suppose 20, 30, 40. Set 4 I'm having numbers 25, 35, 45. Set 5 I'm having numbers 30, 40. Is it clear? I have 5 sets of data, my dear. Okay, listen carefully. ध्यान से सुनो बेटा. चेतन जी, आप, मैं इधर सीओ का सब्जेक्ट के बारे में, अब अगर आप ईसी और डबल ई है, ईसी स्टूडेंट है तो सीओ सब्जेक्ट आपको यूजफुल होगा, डबल ई है तो आपको सीओ नहीं है चेतन. फॉर डबल ई स्टूडेंट सीओ सब्जेक्ट इज नॉट देयर, इट इज ओनली फॉर ईसी स्टूडेंट्स माय डियर. आई थिंक इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए सीओ सब्जेक्ट नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप चेक कर सकते हो. ओके, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों को भी नहीं है. इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रो प्रोसेस है, ये प्लीज चेक इट. ईसी बच्चों के लिए ही है सीओ. चलो, I'm having 5 sets of the data. All of you please be attentive my dear. Please be attentive here. अभी मैंने एक फॉर्मूला को डिराइव करना चाहता हूं. रेडी है सब लोग? सब लोग रेडी है बेटा? मुझे एक बार एश सिंबल, एश रेडी दिखाइए जितने लोग रेडी हैं. We are going to derive now ए पाइपलाइनिंग सिस्टम के लिए कितना टाइम लगेगा, नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम के लिए कितना टाइम लगेगा, ये टाइम से हमने परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ पाइपलाइनिंग को डिस्कस करेंगे. परफॉर्मेंस मैट्रिक्स ऑफ पाइपलाइनिंग बोले तो नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम से कंपेयर करें तो पाइपलाइनिंग सिस्टम में स्पीड अप रेशियो कितना होता है, समझ में आपको? पाइपलाइनिंग सिस्टम इज हैविंग हाउ मच स्पीड अप रेशियो देन नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम. उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन है. ये डेरिवेशन के लिए मैंने एक अच्छा एग्जांपल लिया है, स्टैंडर्ड एग्जांपल है. आप मॉरिस मोनो टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ओपन करें तो ये स्टैंडर्ड एग्जांपल आपको मिलेगा. वही स्टैंडर्ड एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखो, आई हैव 5 सेट्स ऑफ द डाटा बेटा. ओके, एंड 10, 20, 30, this set 1. What I want to do my dear, I want to do a into b plus c. Let us take, this is one variable. So this is particular variable, this a1, b1, this is c. Okay, 3 variables है, a b c my dear. 3 variables I am taking. This is a b c. So I have a repeated operation. क्या है repeated operation? I want to perform a into b plus c. मैं क्या करना चाहता हूं? a into b plus c. ये a into b plus c कितने बार करना चाहता हूं? How many times I want to do? I have to do for 5 sets of the data. ओके ना? चल, a into b plus c है, ये है मेरा डाटा, a into b plus c है, a into b plus. मैं उसको डिवाइड कर रहा हूं सेगमेंट से. ओके, सो फर्स्ट सेगमेंट में क्या कर रहा हूं? दिस पर्टिकुलर a b. ओके, so this is my register. I am taking one register R1. I am taking register R2. Okay, so register R1 में I am taking the A value and register R2 में I am taking the B value. Okay my dear, so this particular process I will take it as segment 1. ये क्या है? ये segment 1. मजा आ गया? चलो, segment 2 क्या है? Segment 2 is I want to multiply this and store in some result. So I am taking segment 2. Segment 2 क्या है? I am taking this R1 into R2 into another register R3. So segment 2 क्या हो रहा है? R1 into R2 होके the result is going to be stored in R3, and at the same time I am going to take C value, whatever the C value is there, that I am going to take into R4.
Okay, so this particular thing I want to divide into take it as segment. So मुझे क्या चाहिए, a इंटू बी प्लस सी चाहिए बेटा. फर्स्ट सेगमेंट क्या है, a को ले रहा हूं, b को ले रहा हूं, खत्म. सेकंड सेगमेंट क्या है, सेकंड सेगमेंट a इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एट द सेम टाइम वही सेगमेंट में मैं c को भी ला रहा हूं, ले रहा हूं. थर्ड सेगमेंट क्या है, थर्ड सेगमेंट में आई एम गोइंग टू ऐड this particular R1 RT stored in the R3 and R4 is stored C is stored in the R4 and a R3 plus R4 को मैं मिक्स कर रहा हूं, R3 plus R4 and that is going to be stored in R5 my dear. Understood? Yeah, it is going to be stored in R5. Takes minimum 15 minutes time beta, 15 minutes में ये problem solve हो जाएगा. So R5, so R5 is equal to R3 plus R4. पूरा कितना segments हो गया अभी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए मेरा क्वेश्चन को, जल्दी बताइए कितना हो गया सेगमेंट्स, हाउ मेनी सेगमेंट्स हो गया, प्लीज ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन. हाउ मेनी सेगमेंट्स हो गया, 3 सेगमेंट, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 बेटा, 3 सेगमेंट्स हो गया. बट ये पर्टिकुलर 3 सेगमेंट्स हाउ मेनी टाइम्स हैव टू बी रिपीटेड, हाउ मेनी टाइम्स हैव टू बी रिपीटेड, सेट 1 के लिए, सेट 2 के लिए, सेट 3 के लिए, सेट 4 के लिए, सेट 5 के लिए. So let us take n is equal to 5. 5 is the number of times this particular instruction set has to be. Got it my dear? Now ध्यान से देखो, इसके लिए मैं एक अच्छा डिजाइन किया हूं. एग्जांपल क्या है, फर्स्ट सेगमेंट बताइए, फर्स्ट सेगमेंट द AI variable and the BI variable has to come into registers. So this I am taking as segment 1, as segment 1 my dear. नेक्स्ट ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो a इंटू बी हो रहा है एंड दिस इज a इंटू बी. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन आई थिंक रजिस्टर R3, राइट? व्हाट इज द रजिस्टर बेटा, इज रजिस्टर R3. टेक दिस R3, ओके, R4. सो दिस इज सेगमेंट 2. सेगमेंट 2 में क्या हो रहा है, सेगमेंट 2 में ये हो रहा है, ओके. And the last one is a segment 3. Segment 3 addition होके R5 में join होगा, R5. Okay, segment 1, segment 2, segment 3. चलो मैं अभी पाइपलाइनिंग का टेबल लेंगे. So all of you clear my dear? All of you following? All of you following my dear? चलो, let us take with respect to clock states my dear. I want to take with respect to clock states. Just for understanding, I am taking a timing diagram like this. Let me take a timing diagram. 1 T state, 1 T state, third T state. किसी बच्चों के लिए टाइमिंग डायग्राम से जाए तो अच्छा होगा. Okay, so let us take this as 1. Let us take this as 2. Let us take this as 3. Let us take this as 4. Let us take all of you ready? चलो, फर्स्ट T1 स्टेट में क्या हो रहा है, फर्स्ट T1 स्टेट में क्या हो रहा है, जल्दी बताइए. फर्स्ट T स्टेट में क्या हो रहा है, सेगमेंट 1. फर्स्ट T स्टेट में क्या हो रहा है, सेगमेंट 1 हो रहा है. चलो, सेगमेंट 1 बोलो तो क्या है, A आएगा, B आएगा. यू अंडरस्टैंड माय डियर? सो दिस इज सेगमेंट. गॉट इट? नाउ सेकंड, यस, लोडिंग द वैल्यूज, लोडिंग द वैल्यूज, क्लियर है, लोडिंग द वैल्यू, सेगमेंट 1 आएगा. नेक्स्ट T2 स्टेट में क्या होगा, T2 स्टेट में क्या होगा, इस वन T2 स्टेट में क्या होगा. Okay, I will do one thing. This is, yeah, here I will take this as A comma, just I am taking segment 1 में क्या हो गया, A comma first T state. Second T state में क्या होगा, this is empty line. Okay, next one क्या होगा, A into B होगा, at the same time C आएगा, C आएगा. Yes or not? Yes or not? T3, T4 not it. Second, got it?
By this time another variable will be coming, right? This is a1 b1 a1 b1 c1, and here you are going to get a2 b2 or not. Are you following my dear? नेक्स्ट T3 स्टेट में क्या होगा? नेक्स्ट T3 स्टेट में a1 b1 प्लस c1 कंप्लीट। गॉट इट माय डियर? सो ध्यान से देखो, सेम कार मॉडल कैसे मैंने एक्सप्लेन किया हूं वही मॉडल पर मैं जा रहा हूं। सो दिस इज द टाइमिंग डायग्राम का स्टैंडिंग। So by the time 3 T states are over, फर्स्ट T state है ये, ध्यान से देखो यहां से फर्स्ट T स्टेट पे मुझे A1 B1 आ गया, सेकंड T स्टेट में C1 भी आ गया। सेकंड T स्टेट में क्या हो रहा है? सेकंड T स्टेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, C1 भी आ रहा है। सो A1 B1 इंटू C1। थर्ड T स्टेट में A1 B1 प्लस C1 हो गया। उसी समय इधर क्या हो रहा है? इसी समय इधर क्या हो रहा है? By the time it is third T state, here what will be there? So here you will be having A2 B2 into A2 B2 into A2 B2 comma C2 आ जाएगा इधर। Got it? And here क्या होगा? A3 B3 will be entering. Am I right or not, my dear? Am I right or not? Please try to follow. Yes. Try to understand, my dear, each and everybody. केतन जी, अनिशा जी, आर यू फॉलोइंग एग्जैक्टली द कार मॉडल? जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया हूं वही एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट टी स्टेट में आई विल गेट द A1 वेरिएबल B1 वेरिएबल। गॉट इट? सेकंड टी स्टेट में A1 B1 मल्टीप्लिकेशन एंड C1 आ जाएगा। थर्ड टी स्टेट में A1 B1 प्लस C1 हो जाएगा। ओके, सो एक पर्टिकुलर वैल्यू, जो कुछ वैल्यूज हमको आ गया 10 20 30, ओके ना। फर्स्ट सेट क्या है? 10 20 30, am I right? 10 20 30 का रिजल्ट आने के लिए कितना टी स्टेट्स कंज्यूम हो गया? अभी कितना टी स्टेट्स कंज्यूम हो गया? 3 टी स्टेट्स कंज्यूम हो गया। अगर इफ इट इज अ नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम, इफ इट इज अ नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम, ये पूरा नंबर ऑफ सीरीज कितना है? हाउ मेनी सीरीज आर देयर माय डियर? हाउ मेनी सेट्स आर देयर? 5 सेट्स आर देयर। सो n is equal to 5 sets. If it is a non-pipelining system, then how much is the total time, my dear? How much cycles होगा? Please tell me. For a non-pipelining system, total time कितना होगा? एक सेट के लिए कितना टी स्टेट्स आ रहे हैं? एक सेट के लिए कितना टी स्टेट्स? 1 2 3। एक सेट के लिए 3 टी स्टेट्स जा रहे हैं। सो नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम ऑफ 5 सेट्स के लिए 15 टी स्टेट्स जाएगा। 15 T states जा रहा है। All of you understood, my dear? Now the same thing we'll do in a systematic way. This is a non-pipelining system. Now I am going for a pipelining system. Let me go for pipelining system. Example देखेंगे। First tell me. फटाफट tell me, my dear. फटाफट tell me now pipelining system. Segment 1 में क्या हो रहा है? फटाफट segment 1 में क्या आ रहा है? एक ब्लैक। segment 1 में क्या आ रहा है इधर? जल्दी बताइए। सेगमेंट 1 में इधर A1, इधर ऐसा ना, फर्स्ट टी स्टेट A1 B1, am I right? सेगमेंट 2 खाली है, सेगमेंट 3 भी खाली है। दिस इज फर्स्ट क्लॉक पल्स। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। लेट अस सी अनीशा नाउ फॉर पाइपलाइन में कितना होगा? A1 B1। नाउ सेकंड लाइन में क्या होगा? दिस A1 B1 विल बी मल्टीप्लाइड एंड C1 विल बी आएगा। R3 कंटेंट बताइए। R3 content will be A1 into B1 and R4 content क्या होगा? C1, and this is not it. But at that moment segment 1 R1 R2 का वैल्यू क्या आएगा? R1 R2 का वैल्यू A2 B2 निकलेगा। चलो क्लियर है। नेक्स्ट क्लॉक थर्ड स्टेट में ये क्या होगा? दिस विल बी कमिंग हियर एज A1 B1। am I right or not, my dear? A1 B1 plus C1 आ जाएगा। सो हियर दिस विल बी A1 B1 प्लस C1। बट इधर क्या होगा? इधर A2 B2 एंड C2 आएगा। कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्स आई एम टेकिंग, बट हियर R1 क्या होगा? A3। नेक्स्ट क्लॉक साइकिल, फोर्थ क्लॉक साइकिल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट क्लॉक साइकिल, सेकंड क्लॉक साइकिल, थर्ड क्लॉक साइकिल। सो बाय द टाइम थर्ड क्लॉक साइकिल, एट द एंड ऑफ थर्ड साइकिल, at the end of third cycle
one set is over or not? Set one set is over or not? Yes, one set is exited. Next बताइए फास्ट, थोड़ा पेशेंस होना है. चलो इधर क्या होगा, A2 B2 प्लस C2 एंड इधर क्या आएगा A3 into 3 and here we'll get C and here A4. Try to understand my dear, at the end of fourth clock cycle, are you getting my point my dear? At the end of fourth cycle, try to understand, at the end of fourth cycle, second set out, you got it? First set 10 20 30, second set 15 25. are you getting my dear? मजा आ रहा है. फर्स्ट क्लॉक फर्स्ट सेट जाने के लिए 3 टी स्टेट्स, नेक्स्ट सेट के लिए जस्ट वन मोर टी स्टेट, दैट इज व्हाट द पाइपलाइनिंग. इफ देयर इज नो पाइपलाइनिंग क्या होगा, सेकंड सेट के लिए भी 3 टी स्टेट्स लगेगा, बट इधर 3 स्टेट्स नहीं, केवल एक्स्ट्रा 1 टी स्टेट हो रहा है. बस एक्स्ट्रा 1 टी स्टेट में क्या होगा, सेकंड सेट बाहर आ रहा है. मजा आ रहा है आपको? चल नेक्स्ट इधर क्या होगा बेटा, जल्दी बताइए. इधर क्या होगा, इधर हमको मिलेगा A3 3 प्लस एंड हियर क्या होगा A4 into B4 इधर आएगा एंड दिस विल बी हैविंग C4 एंड हियर क्या आएगा A5 into. ओके सो एट द एंड ऑफ, ध्यान से सुनो, एट द एंड ऑफ फिफ्थ टी स्टेट, एट द एंड ऑफ फिफ्थ साइकिल, थर्ड सेट इज आउट, सेट नंबर 3 इज आउट, सेट नंबर 3 इज आउट. मजा आ रहा है. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर देखिए क्या हो रहा है, जल्दी बताए. तो हियर A4 B4 प्लस 4 आएगा एंड हियर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट A5 to 5 and here 5 आएगा. What about this here? What about this here my dear? I am expecting the answer from you. What about this here? Do you get any data here? Sixth one, here are you going to get anything? Please answer me. Here are you going to get A6 B6? That is my question. Are you going to get A6 B6 here? No my dear, because our sets are how many? 5 sets. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, set 6 and finally क्या हो रहा है इधर, this at the end of sixth, the fourth set is out and the last क्या होगा बेटा, here finally मुझे A5 5. So at the end of seventh T state, the fifth set is. Got it? All of it clear? Chalo. Very good. Only we have 5 sets. So try to understand this. N is the number of sets. N is the number of sets. How many of you clear about these concepts, my dear? Now we are going to derive one simplest formula for this. We are going to derive one simplest formula for this. For example, let us take for each clock pulse. Okay, for each clock pulse. Now we are going to make a calculation, my dear. What is a calculation? ध्यान से सुनो. For example, one clock cycle time is equal to TP. Okay, with clock cycle time I am taking TP. If I am having n tasks to be performed, time required to perform first task कितना होगा? Consider a K segment pipeline. Suppose you have taken how many segments pipeline? How many segment pipeline we have taken? 3 segment pipeline. Am I right or not? For 3 segment pipeline, just before I have taken a 3 segment pipeline. Am I right? For 3 segment pipeline with a clock cycle of one clock cycle is how much? 1 T state. One clock is equal to 1 T state. Okay. Now time required to perform the first task कितना हो गया? Time required to perform the first task कितना हो गया? 3T हो गया. Time required to perform first task कितना हो गया? 3T हो गया. Next, time required to perform the remaining task क्या होगा? मेरे पास कितना सेट्स है? कितना सेट्स है मेरे पास? 5 सेट्स हैं.
सो 5 सेट्स बोलो तो क्या होगा, 5 - 1 4 इंटू होगा. यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक और नॉट माय डियर? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ सेट्स 5 है. टोटल नंबर ऑफ सेट्स हाउ मनी है? n is equal to how many? n is equal to 5. Try to understand. मेरे पास सेगमेंट्स का साइज कितना है? k. Let us take the k. Try to understand. Number of segments is equal to k. Time for one particular cycle is equal to t. मेरे पास कितना टास्क है? 5 टास्क है, 5 सेट ऑफ डाटास है. सो एक पर्टिकुलर साइकिल के लिए टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वन पर्टिकुलर टास्क 3t and the remaining कितना है? n - 1 tp. You understand this logic? 3t है and 3t है and remaining कितना है? 5 - 1 into. Please make a note of this point. 3t क्या है? This is a kt. This we can take it as kt. Try to understand. This we can take it as k into tp, where k represents the number of segments. All of your understanding. Please show your response, my dear. K represents the number of segments, TP represents the time of clock cycle, and this one n - 1. This is the n. Okay, n - 1. Got it or not? Everybody clear or not? This is going to become n - 1 into. Okay, so now from this total time कितना होगा? So what will be the total time? Total time will be this plus. So total time will be k plus n - 1 into tp. Please note down this. For a pipelining, time taken for performing n task will be k plus n - 1 into tp. Please make a note of this particular formula. Clear? K is what? K is number of segments. K is the number of segments. N is the number of instructions, we can say, or number of tasks, we can say, number of tasks or number of sets, we can say, number of instructions, number of tasks. Okay, and TP is the time of pipelining to perform clock cycle time. Dear aspirants, मेरा बात सुनो. What is the formula for non-pipelining system? What is the formula for non-pipelining system? This is the pipelining system formula. For a pipelining system, the formula is k plus n - 1 into tp, where k represents the number of segments, n represents the number of tasks. Got it? What is the time taken for the non-pipelining system? Non-pipelining systems, for example, previously we have taken, we are having how many sets? 5 sets. One set is taking 3t. Very good. N into tp. Yes or not? For non-pipelining, कितना होगा? n into tp होगा. This is n is the number of sets 5. One particular is 3t states, so 5 into 3 15. Got it, my dear? So time for n task. If a non-pipeline system takes tn time to perform a task, so time for task is equal to n into tn. Why? Because that is t is pipelining time and tn is a non-pipelining time. Now, if I am comparing these two, this is n into tn, my dear. This is n into tn, and the pipelining time is equal to what? Pipelining time is what? K into tp actually plus क्या है बताइए? n - 1 into tp. Am I right or not? This is the time taken for one task. This is a time for one pipeline, one task, and remaining tasks. The time taken for one task and the remaining tasks. If you take the tp common, we are going to get k plus n - 1 into tp. Am I right or not? K plus n - 1. Now tell me, comparatively non-pipelining system, the pipelining system is how far better? For example,
आई हैव सर्टेन प्रोग्राम, दैट सर्टेन प्रोग्राम मैंने पाइपलाइनिंग करके किया हूं, 50 माइक्रोसेकंड्स में कंप्लीट हो गया। पाइपलाइनिंग सपोर्टेड सिस्टम है, 50 माइक्रोसेकंड्स में हो गया। द सेम सेट ऑफ टास्क मैंने नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस से किया हूं, इट हैज टेकन सम 150 माइक्रोसेकंड्स। ओके ना, ये पाइपलाइनिंग प्रोसेस से 50 माइक्रोसेकंड्स में खत्म हो गया, नॉन पाइपलाइनिंग से मुझे 150 माइक्रोसेकंड्स में हो गया। नाउ प्लीज टेल मी, comparatively non-pipelining system, this particular pipelining system is how many times better, how many times it is more speedy? Can you tell me? एक सेट ऑफ टास्क है मेरे पास, ये सेट ऑफ टास्क्स नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम्स पे 50 माइक्रोसेकंड्स में खत्म हो गया। द सेम पाइपलाइनिंग सिस्टम से 50 माइक्रोसेकंड्स में खत्म हो गया, नॉन पाइपलाइनिंग सिस्टम से 150 माइक्रोसेकंड्स में खत्म हो गया। नाउ व्हाट इज द स्पीड अप पैरामीटर ऑफ दिस पाइपलाइनिंग ओवर द नॉन पाइपलाइनिंग? 3 टाइम्स ना, दैट मींस हाउ द 3 केम 150 by 50 ना, दैट मींस व्हाट इज द रेशियो? द रेशियो इज डिफाइंड एज स्पीड अप रेशियो। व्हाट वी कॉल दिस रेशियो? दिस रेशियो इज कॉल्ड एज स्पीड अप रेशियो, and the speed of ratio is one of the performance metric. The speed up ratio is defined as one of the performance metric of pipelining. It is defined as a ratio of time of non pipelining to time of pipelining. मजा आ गया? Remember this formula अनीशा जी, स्वागत। नॉन पाइपलाइन टाइम बाई पाइपलाइन टाइम कितना हो गया? नॉन पाइपलाइन टाइम का आंसर n into Tn is k plus n minus 1 into T. Now listen carefully, my dear. Listen carefully. Here's some adjustment. For example, if n is very very high, suppose if n is very very greater, for example हमारा previous example में हमने 5 sets लिया, suppose it is 100. If it is 100, definitely क्या होगा? ये n से कंपेयर करें तो ये k minus 1 can be negligible or not? If n is very much greater, ये क्या होगा my dear? If n is very much greater, this particular formula will become as n into Tp ना? Got it my dear? मजा आ रहा है? Suppose if n is very much greater, if you take k minus 1, अरे 1 को नेग्लेक्ट करो भाई, 1 को नेग्लेक्ट करो, n is suppose some 1000, we are having 1000, so 1000 is very much greater than k. K is a number of t states, so number of segments, so 1000, k is a number of segments, so 1000 नहीं हो सकता। एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए a into b plus c, ab collection 1, a into b c collection 2, a into b plus c segment 3 सेगमेंट्स होता है, लेकिन मेरा n can be many, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a4 b4 c4, a100 b100 c100, a1000 b1000 c1000. So n can be many, k can be short, so comparatively n, k is negligible, n minus 1 is approximately n. Suppose if you take 1 million instruction, 1 million is 1, that is also 1 million approximately, so we can take this as n into Tp हो जाएगा this particular expression. So then what happens to S will become as n into Tn, time of non-pipelining, divided by time of pipelining. That means this is equal to Tn by Tp हो जाएगा। Clear है my dear? So ideal speed up ratio formula, that's what we have done simply. That's what I have given an example. One particular system which is having pipelining is completing in 50 microseconds. A non-pipelining system is taking 150 microseconds. Then the speed up ratio can be directly taken as 150 by 50 over. You understand? मैंने simple की बात में बताया. A non-pipelining system is performing 150 microseconds. Pipelining system is performing 50 microseconds. What is the speed up ratio? इतना बड़ा calculation क्यों सर? 150 by 50 खत्म हो गया. Yes. For example, for a particular state, if the time of non-pipelining and time of pipelining is, that's a special case. That is a special case होगा. हो सकता है suppose single instruction है,
either इस पाइपलाइनिंग प्रोसेस में, नॉन पाइपलाइनिंग प्रोसेस में होगा, S ideal will be 1. That's what the next. So लेकिन here that K is what? That K is the number of T states. See here, if time to perform one task is same in pipelining and non-pipelining, then क्या होगा? Tn is equal to KTP होगा. नॉन पाइपलाइनिंग का फार्मूला क्या है? नॉन पाइपलाइनिंग का फार्मूला n इंटू टी एन, नॉन पाइपलाइनिंग का फार्मूला क्या है? n इंटू टी एन, एंड पाइपलाइनिंग का फार्मूला क्या है? k प्लस n माइनस 1 इंटू टीपी. सो नाउ if the time to perform one particular task, whether it is pipelining or non-pipelining, then Tn will become KTP. So S ideal will be equal to K. That K is the number of segments. Clear हो गया अनिशा? Very good. For a particular state, same time should be taken for comparison. So Tn is equal to Tp. That depends. We cannot say. That is a complicated thing. Why? Because time of pipelining and time of non-pipelining definable. Are we going to study the case if time required to perform different tasks is different, like fetch time is less than? Yeah, that is going to be very, very different. Why? Because if you suppose, let us clear instruction say T1, T2, T3. T1 is just collecting the data. T2 may be involving data collection from memory. T1 state is opcode fetch. Yes, your good question. That is a good question. T1, T2, T3 नहीं same हो सकता है. It's a complicated thing. Opcode fetch. Opcode fetch can take 4 T states. And opcode fetch internally may require memory read cycle. Memory read cycle may take 3 T states. And stage 3 write back. Write back means memory write. ध्यान से सुनो, एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. Opcode fetch किया हूं मैंने. For example, move accumulator comma within the square brackets 100. For example, if I take move accumulator within the square brackets some 100. So what is the first cycle? First cycle is opcode fetch. Okay na? First cycle is opcode fetch. But opcode fetch contains how many T states? Opcode fetch takes 4 T states generally. उसके बाद इसमें क्या है? मेमोरी रीड है. मेमोरी रीड है. मेमोरी से रीड करना है. That can be understood. You understand? फर्स्ट टी स्टेट में opcode fetch हो रहा है फर्स्ट सेगमेंट. You understand? सेकंड सेगमेंट में क्या हो रहा है? मेमोरी रीड हो रहा है. So segment 1 and segment 2 may not be same time here. You understand? Swagat, Suryavamshi, is it clear? Is it clear? Segment 1 and segment 2 may not be same here in this situation. That is what we call as fetch and decode and execute. All of you got it? That means individually fetching के लिए कितना T states, opcode fetch के लिए कितना T states. फर्स्ट साइकिल में opcode fetch हो रहा है, सेकंड साइकिल में मेमोरी रीड हो रहा है, थर्ड साइकिल में मेमोरी राइट हो रहा है. फर्स्ट साइकिल fetch, second cycle memory read, third cycle memory write. Okay. Now let us take one problem. This is what we call, so generally how to remember, sir, speed up ratio. If n is given, that means n is limited, we can take n is lesser. We can take n is given means lesser, n into Tn by k plus n minus 1. We can take this formula. If n is not given directly, we can take Tn by Tp. Why? Because n is not given means n we can take it as very, very greater. Please make a note of this point. Very easy, man. Non-pipelining divided by pipelining. Only the thing is, this is a non-pipelining time. The non-pipelining time, and this is the pipelining time. All of you understood? N is given means n is finite. It is somewhat limited. N is some limited number. If it is very, very greater, we can take this. Very, very big number, we can take this Tn by T. Okay. Hello, my dear. Based on this, now let us go for one simple question. Try to answer this question. This question was asked in GATE CSC. Try to do this question. Please fast.
Let us take this question. All of you understood? Don't confuse about the formulas. बिना formulas से भी ये question को correct कर सकते, ये question को attempt कर सकते बिना formula also. Try to do it. A non-pipeline system takes 50 nanoseconds to process a task. Can you tell me what is this 50 nanoseconds? What is this 50 nanoseconds? Fatafat, please answer me exactly. What is this 50 nanoseconds? I'm expecting the answer from you. 50 nanoseconds is what? Non-pipeline system takes 50 nanoseconds. What is that 50 nanoseconds in this formula? What is that 50 nanoseconds in that formula? Very good. It's a time of non-pipelining. And for a non-pipelining system, for a single task, 50 nanoseconds. The same task can be processed in a 6 segment. What is this 6? What is this 6, my dear? 6 segment. 6 क्या है? पाइपलाइनिंग में सेगमेंट्स को डिवाइड कर रहे हैं. 6 क्या होगा? 6 सेगमेंट. 6 क्या होगा? जल्दी बताइए. मैंने दिया आपको पूरा एक एक लेटर का इंडिविजुअल पैरामीटर्स मैंने दिया. 6 क्या होगा? 6 सेगमेंट्स इज व्हाट? नंबर ऑफ सेगमेंट्स का डिनोशन क्या है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज k, my dear. With a clock cycle of 10 nanoseconds. So what is this 10 nanoseconds? Got it? Next, determine the speed up ratio of the pipeline for 100 tasks. What is 100? Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5, set 6, set 7, set 8, set 9. I have 100 sets of the data. So what is this n? Got it? What is the maximum speed up that can be achieved? First, what is the speed up ratio? जल्दी बताइए बेटा, स्पीड अप रेशियो कितना होगा? स्पीड अप रेशियो कितना होगा? स्पीड अप रेशियो मींस नॉन पाइपलाइनिंग टाइम बाय पाइपलाइनिंग टाइम. नॉन पाइपलाइनिंग टाइम कितना है? n into Tn. पाइपलाइनिंग टाइम कितना है? पाइपलाइनिंग टाइम फर्स्ट टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम? k into Tp प्लस रिमेनिंग टास्क के लिए n-1 इन. दैट्स इट. सभी रिमेंबर कर सकते हैं. The pipelining time, the non-pipelining time. Not answer. आंसर बताइए. तो बताइए भैया जल्दी. n कितना है? 100. Tn कितना है? 50 nanoseconds divided by, you can take k plus n-1 into Tp. Now this you can take it as k plus n-, k is 6, Tp is 10 nanoseconds equal to 100. 1. Our answer. 4 point is a ratio. That means comparatively non-pipelining system, pipelining system is faster by how much time? 4.7. Okay. And what is the maximum speed up? Maximum speed up बोलो तो क्या है? 1. The ratio becomes 1. So that means S should be equal to Tn by, when it can be, S is equal to Tn by Tp. That is a maximum speed up ratio, right? Non-pipelining time by pipelining time, that is a maximum speed up ratio. So maximum speed up can be how much? Non-pipelining is 50 and this is, please make a note of this point. You understand? This is the ideal. This is ideal actually. You can say this is ideal. This is the ideal. This is the real. You understand, my dear? All of you clear? Can I take this the ideal and this the real? This is ideal and this is the real.
आइडियली क्या होना है, TN by TP रेशो लेना है बस। TN के लिए 50, TP के लिए 10। सब कुछ क्लियर नाउ? इज आइडियल। मजा आ गया बेटा? एवरीबडी एंजॉयड द सेशन? No need to by heart the formulas. No need to by heart the formulas. Just try to understand the concept. एग्जाम में आप खुद से डिराइव कर सकते हैं ये फॉर्मूला। एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए KTP हुए तो मेरे पास रिमेनिंग सेगमेंट्स के लिए n-1 TP होगा। You understand? So KTP plus n-1 TP is a pipelining time. नॉन पाइपलाइनिंग टाइम बाई पाइपलाइनिंग टाइम डिवाइड करें तो आपको स्पीड अप रेशियो। एवरीबडी क्लियर माय डियर? I enjoyed the session. Love you all. So try to practice more DPPs on this pipelining. I am going to give more questions on this particular speed up ratio. This is one of the performance metric of the CPU, which is involved 8086, 80x86 series, especially advanced microprocessor पाइपलाइनिंग का इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर सेशन you are followed very well, please give me your comments. Okay, everybody please try to give your comments. तो जो कुछ हमने डिस्कस किया आज का क्लास में, प्लीज टेक अप दिस PDF. Okay, what is the performance metric pipelining, how we have derived the formula, and these are the best examples I have taken from the Maris-Mano textbook. And before that I have given it with a clock T state based, and before that we have taken our car example. The car example gives clear understanding. अगर ये car example आपको understand हो गया, remaining any problem you can do. My dear, everybody clear? आज का सेशन के लिए, so in the entire lecture of 5 sessions of COA, I have given you the concept of addressing modes clearly. I have explained you the addressing modes with respect to 8085, with respect to 8086, with respect to COA also. And in the machine instructions also, I have explained you the machine instructions with respect to COA as 3-byte instructions, 2-byte instructions, sorry, 3 address field instruction, 2 address field instruction, 1 address field instruction. And next, coming to the last class, CPU clock, CPI, clocks per instruction. Clocks per instruction or cycles per instruction, we have explained with respect to microprocessor and with respect to. So in 2 ways I have dealt the subject of COA within the short time. One is with respect to ECE background, one is with respect to CSE. Because the subject is allotted from the CSE syllabus, they have kept for ECE people. When the syllabus of CSE is kept for ECE people, definitely there should be certain metrics to be compromised to C level. So I hope I have delivered the best content to you within a short time. अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हमको 1 शॉट सीरीज में आने के लिए कोशिश करूंगा। 1 शॉट सीरीज में मैं एक टॉपिक को इतना डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव मैनर में मैं डिस्कस करता हूँ। ये सेशन, ऑल ऑफ यू गॉट क्लैरिटी नाउ, ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस सेशन। जरूर आपका comments, constructive comments, suggestions, everything you can share in the field. The last lecture, or will you conduct a practice question too? आज tomorrow से और एक सब्जेक्ट स्टार्ट होगा बेटा, तो प्रैक्टिस सेशन प्लान करूंगा, शेड्यूल मिले तो प्लान करूंगा। अभी तो सब्जेक्टिव लेक्चर्स के लिए खत्म है, प्रैक्टिस सेशन चांस मिले तो मैं करूंगा। डेफिनेटली प्रैक्टिस सेशन विल बी टेकन ऑन एड्रेसिंग मोड्स, इंस्ट्रक्शन सेट। Okay, all of you enjoyed the session? Please share your valuable comments, and DPP is available by the night. You can take the DPP and practice the question, and in the comment box you please share your doubts also.